Dear students, in this video we will study about the fertilization in flowering plants. Okay, the fertilization in flowering plants. First we have to know what is fertilization. What is fertilization? That means fertilization is the process of fusion of fertilization is the process of fusion of male gametes with that of female gametes. Female gametes to produce the diploid zygote. Okay, this is the definition of fertilization. That means when the male gamete fertilize with or fused with the female gamete, then it is converted into the diploid zygote. Okay, that is 2N. That means N male gamete plus N female gamete converted into a zygote, that is male female. That is the zygote, that is 2N, that is diploid. Okay, this is the process of fusion of a male gamete with that of a female gamete and produce the diploid zygote. And this fertilization, that means the fertilization was given by the Strasburger. Strasburger derived the term fertilization. Okay, do you know what is fertilization? First we know that what is fertilization. Then who derived the term fertilization? That means Strasburger, who derived the term fertilization. बुझेला पिले तो स्ट्रासबर्गर जे कि हम कौन कले ना फर्टिलाइजेशन गोटे टर्म देले. देन नेक्स्ट मेकानिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. Mechanism of fertilization in angiospermic plants. Okay, then we go to the mechanism of fertilization in angiospermic plants. Mechanism of fertilization in angiospermic plant means that means a special type of a mechanism which occurs in angiospermic plant, that is what? That is a double fertilization. And which was proposed by the Nowotny. Okay, Nowotny derived the term double fertilization. That means 2 times fertilization occurs 2 times, so that it is called double fertilization. Means dual type of fertilization takes place in the angiospermic plant, so that this term was derived by the Nowotny. Okay, then we go to the mechanism of double fertilization. Okay, आमे एबे जिबा पिले कोन ना मेकानिज्म को जिबा. एटा लिखला पिले वर्तमान आपको लिभ होची मेकानिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन को वर्तमान जिबा.
mechanism of double fertilization. That means double fertilization occurs in the angiospermic plant, all the higher plants. That means two type of fertilization. The double fertilization means two times fertilization होउछ कहले double fertilization. Then what are the events of fertilization? First हमको देखिबा जे केतेटा events रहउछ. The events of fertilization, but the mechanism of fertilization involves the mechanism of fertilization involves the following steps or the following events. Following steps. Okay, what are the steps? First one, pre-fertilization events. Pre-fertilization events, fertilization events, okay. Then third, post-fertilization events. Post-fertilization events. That means double fertilization involves three stages. One is pre-fertilization events, fertilization events, and another is the post-fertilization events. That means pre-fertilization means before the fertilization, what happens? Fertilization means during the fertilization, what happens? Post-fertilization means after fertilization, what happens? These are the meanings of fertilizations. Okay. तेणु आम देखिले जे फर्टिलाइजेशन पूर्वर कौन हो, फर्टिलाइजेशन समय कौन हो, फर्टिलाइजेशन पर कौन हो. ओके, फर्स्ट वी गो टू द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्स्ट वी गो टू द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. What is pre-fertilization events? That means pre-fertilization events also involve some following steps. What are they? First, pollen pistil interaction. Second, germination of pollen grain on the stigma. Okay, first one, pollen pistil interaction. Second one, germination of a pollen grain on the stigma. Third one, formation of movement of pollen grain, movement of pollen tube in the style. Movement of a pollen tube in the style. Fourth one, entry of a pollen tube into the ovule. 5, entry of pollen tube into the embryo sac. Okay, these are the 5 substages of pre-fertilization events. That means these are the steps
which can takes place before fertilization. तो फर्टिलाइजेशन पूर्व यही 5टा स्टेप को आमको जानिया को पड़ो तापर आम जा फर्टिलाइजेशन. ओके फास्ट फर्टिलाइजेशन कौन हम ना पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन. तार आफ्टर पॉलिनेशन. डू यू नो व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination means the transfer of pollen grains from an anther of a male flower to the stigma of a female flower. That process is called pollination. After pollination, the pollen grains are landed on the stigmatic surface. Okay, landed on the stigmatic surface. After landing, the pollen grains germinate on the stigma. How it is possible? That means it is possible due to the pollen pistil interaction. First we have to know what is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction कहले हमें कौन बुझीबा. तो what does it mean? That means a specific pollen grains can landed on the specific stigma of the female gametophytes. Then it receives, otherwise rejected. That means if the pollen grains and the pistil, if the pollen grains and the pistil are the same species, then that stigma can receive the pollen grains and the pollen grains can able to germinate on that stigma. Otherwise it is discarded or it is degenerated. बुझे नहीं. फॉर एग्जाम्पल देख पे मुझे स्ट्रक्चर करुच्ची. This is the gynoecium, structure of a gynoecium, and this is the stigma. This part of the gynoecium is called stigma, and this is the style, and this is the ovary. Stigma, style and ovary. Okay, and this stigma can receive the pollen grains from the anther of male flower. After receives, the pollen grains can germinate on the stigma if that pollen grain may be the same species. Hello, so जदि से pollen grain टा same species रहिथिबो, that then it is germinates on that stigma. ओके ताहले सेटा कौन करिवो ना स्टिग्मार सरफेस रे जर्मिनेट करिवो. फॉर एग्जांपल देख पिले मु एठी कौन करछि ना गोटे पोलेन ग्रेन करछि. देख दिस इज पोलेन ग्रेन. Okay, this is the pollen grain. The pollen grain when germinate on the stigma, then they create or can develop a pollen tube. This is called pollen tube, and this pollen tube development depends on the pollen pistil interaction. That means if the same species
जदि से पोलेन ग्रेनटा सेम स्पीसीज होइतिबो ताहाले से अलाउ करिवो जर्मिनेट पई नहले अदरवाइज से कोन करिवो ना डिजेनेरेट कर दबो बा डिस्कार्ड करिवो ओके तेणु देख पिले एठी जो पोलेन ट्यूबटा डेभलप हबो तो केमिति जर्मिनेट ताहाले पोलेन ग्रेनटा जर्मिनेट हेले ही पोलेन ट्यूब डेभलप होउची ताहाले से स्टिग्मा रे एमिति को गोटे सब्सटेंस रहउची जोथि पई पोलेन ट्यूबटा डेभलप करूची दैट मीन्स chemical which is consist of that is water and sugar. These water and sugar chemicals can help to germinate of the pollen grain and to develop the pollen tube. तो से pollen grain टाको germinate करिवारे help करे and can develop a pollen tube. Okay, and that pollen tube again moves towards the ovary through style. These are the style, and these styles are occupied by the parenchymatous tissues. Okay, these are occupied by the parenchymatous tissues. That style, this is the style may be hollow or may be cylinder or solid. Hollow may be solid. That means this style may be hollow or may be solid. If the style is hollow, then what happen? Now the pollen tube can easily penetrate towards the ovary, and if the style is solid, then that means the stigmatic surface secretes some chemicals which can breaks the parenchymatous tissues and create a hollow, then enter into the ovary. Okay, देखो पिले एठी मु तार स्ट्रक्चरटा करूची. These are the callose plugs. We have already known what is the callose plugs. Callose plugs. What is callose plugs? Now callose plugs helps to maintain the backflow, or it prevents the backflow of the what? One is generative cell, another is the tube cell. That means a pollen tube contain what? देख पिले मुझे स्ट्रक्चर करुच्ची ओव्यूल स्ट्रक्चर करुच्ची. दिस इज ओभारी एंड दिस इज ओव्यूल. See our students, this is the ovule. Okay, this is the embryo sac. And this is the ovary, this is the ovule, and this is the embryo sac. Okay, and this pollen tube moves downward. Pollen tubes moves downward. Okay, and this contains what? One generative cell and another tube cell. Before enter into the embryo sac, it becomes 3 cell stage. That is
ओभिल भितर एंट्री करिया पूर्व से 3 स्टेज हो जाती क्या भितर ना जिते बड़े से स्टिग्माटिक सरफेस रे जर्मिनेट हुए जिते कौन हुए ना पोलेन ट्यूबटा जर्मिनेट करे सॉरी पोलेन ट्यूबटा डेभलप हुए तार तो पोलेन ग्रेनटा जर्मिनेट करे कौटी ना स्टिग्माटिक सरफेस रे सेते बड़े पोलेन ट्यूब डेभलप हवा सहित ता भितर कौन डेभलप होता है ना जो गोटे थाए पे ट्यूब सेल आउटे थाए जेनेटिव सेल generative cell. Tube cell is also called as vegetative cell. Okay, TC or VC. This generative cell again divide mitotically or mitosis occurs of generative cells. That means generative cell divide mitotically to form 2 male gametes. Mitosis होबो कत कोन होबो ना 2 male gametes. Okay, that means a pollen tube contains 3 nucleus. 2 is 2 male gametes, another is 1 tube nucleus. Okay, so that a callose plugs are formed after some intervals. Why it is formed? That it prevents the backflow of the 3 celled or 3 nucleus, that is 2 male gametes and 1 is generative cell or tube cell. Sorry, tube cell or vegetative cell. Okay, these are the callose plugs which are formed after some intervals of the entry of what? Pollen tube. Okay, these are the callose plugs. These are the callose plugs. देखिलो पिले, this is the structure of what? The pollen tube, and this is the ovary, and this is the stigma, and how it enter into the what? Into the ovule. देखो पिले, these events are undergo the pre-fertilization events. That is जो प्रोसेस आम सब देखिले, these undergo the pollen pistil pre-fertilization events. First we know that pollen pistil interaction. That means when the same species or the specific species or the same species of pollen grain, if the pollen are the same species, then stigma can allow the pollen grain to germinate on that surface. Then it germinates, and during germination of a pollen tube, in that pollen grain contains 2 cell stages. Primary stage re pollen grain ta 2 cells thibo. After germination it become 3 cell stages. After germination it become 3 cell stages. This is the 3 cell stage. 2 are 2 male gametes and another is the vegetative cell or tube cell. Okay, then next देखो पे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा आमे जानिले जे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हैला. देन मूवमेंट ऑफ अ पोलन ट्यूब इन द स्टाइल, ता भीतर सेटा मूवमेंट हैला पर से कोन कला ना ओव्यूल भीतर के एंट्री कला. देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ता भीतर देखिबा पिले ओव्यूल भीतर के एंट्री करबो. व्हेन पोलन ट्यूब enter into the ovule, when pollen tube enter into the ovule, it cross 3 lines or 3 sources. 3टा सोर्स देकी पोलन ट्यूब टा ओव्यूल भीतर के एंट्री करिवो. बुझला नहीं?
That means pollen tube enter into the ovule through what type? That means one is porogamy, another is mesogamy, another is chalazogamy. बुझेला पिले देख ये पिले pollen tube enters into the ovule in three ways. तीनटा सोर्स देकी से एंट्री करुछि. Pollen tube enters into the ovule in three source, that is porogamy, that means enters through what? Micropyle. Then mesogamy enters through what? Integuments. Then chalazogamy enters through salazal end. बुझिले पिले these are the sources of entry of pollen tube into the ovule, or these are the paths, these are the three sources of three paths where the pollen tube can enters into the ovule. Okay, first is porogamy, then mesogamy, then chalazogamy. Then if we draw the structure of ovule, then we can analyze the porogamy, mesogamy and chalazogamy. देख पिले एठी मोटे ओव्यूल स्ट्रक्चर करूची. This is the anatropous ovule. This is an anatropous ovule. Anatropous ovule. See here students, this is the anatropous ovule. That means the ovule face towards the back sides or towards the reverse path of an orthotropous. This is anatropous ovule. In anatropous ovule, what happened? The micropyle face towards the bottom. Okay, that means this is the micropyle. This part is called micropyle end. These are the chalazal end. This part is called chalazal end. Micropyle end, and this is the integument.
ओके देख पिले ये जो आम स्ट्रक्चर कले स्ट्रक्चर आम कौन देखुं दिस इज द अनाट्रोपस ओव्यूल एंड व्हेन द पोलन ट्यूब when the pollen tube enters into the ovule then it can enter through three different ways. What are they? One is salazal end, one is integument end, then is micropyle end. That is micropyle देई गले आमे ताकू कहले पोरोगामी, integument देई गले आमे ताकू कहले कोन मेजोगामी, salazal end देई गले आमे ताकू कहले चालाजोगामी. So these are the three sources of enter of pollen tube into the ovule. Okay, तेणु आमे देखिले फाइनली मैक्सिमम angiospermic plants, maximum 90% of angiospermic plant shows porogamy. That means pollen grain enters into the ovule through micropyle. That means we assume this is a pollen tube and this pollen tube enters into the ovule through micropyle. Okay, and it contains also 3 nucleus, 2 male gametes, another tube cell, and this is 2 male gametes. Okay, देख पिले तापर कौन हो देखा एटा गला कौन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आम गले तापर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक. लास्ट पार्टटा देख ओव्यूल भितर एंट्री गला तापर आम देखिए एटा हो तुम कौन है एम्ब्रियो सैक. This is the entire ovule and this is the embryo sac. Okay, and embryo sac possess these are the antipodal cells. These 3 are called the antipodal cells. These 3 are called what? Egg apparatus. Okay, this is the egg. Then we go to the entry of pollen tube into the embryo sac. तापर आमे जिबा कोन पिले ना आमे देखिले pollen tube टा ओव्यूल भितर एंट्री करियला केमिति ना तीनटा सोर्स देकी गोटे होची पोरोगामी, मेजोगामी, चालाजोगामी. Then we go to the entry of pollen tube into the embryo sac. Then the pollen tube after enters into the ovule then enters into the embryo sac because embryo sac is present inside the ovule. Okay, तेणु से ओव्यूल भितर आम रोची एम्ब्रियो सैक तेणु ओव्यूल भितर को एंट्री करियला तापर का पाखु एंट्री करिवो ना एम्ब्रियो सैक भितर को एंट्री करिवो. ताले एटी पिले एम्ब्रियो सैक भितर केमति एंट्री करिवो देख पिले देख पिले ये समस्त देख these are the egg apparatus, this is the micropyle end. ओके आमे देखिले जे माइक्रोपाइल एंड देके एंट्री करिवो तेणु माइक्रोपाइल एंड रे हमर कोन रहउची ना एग apparatus रहउची. एग apparatus रे कोन रहउची ना these are 2 synergids and middle is the egg. This is the egg nucleus and all these are haploid. This is egg nucleus. Okay, and these 2 are synergids. Okay, and there is another special organ which are present in the synergid. These are called the filiform apparatus which can help the guidance of the pollen tube in the embryo sac. तार अर्थ हूँ कौन ना synergid भितर आमर जो रोच कौन पिले filiform apparatus. This filiform apparatus can guide the what? The pollen tube inside the embryo sac. तर तो embryo sac भितर filiform apparatus कौन करे ना गाइड करे कहा को ना pollen tube को. ता भितर मन कर एंट्री करिगला एठी एंट्री कला परे pollen tube टा embryo sac भितर कार को सोर्स देकी जीवो सेटा डिपेंड करे filiform apparatus हैला. That means the pollen tube after enter into the ovule then enters into the embryo sac and filiform apparatus can help to guidance of the pollen tube. And how it is possible? Then the filiform apparatus can allow the pollen tube through one of the synergid and the micropyle.
ओके तो सिनर्जिड रेटा वाल अच्छी ना नहीं पिले दिस सिनर्जिड वाल वन ऑफ द सिनर्जिड वाल आउ सिनर्जिड देकी सेटा जीवो ता भीतर जो स्पेस थिबो देख पिले एटा होची वाल एटा होची सिनर्जिड ओके ता भीतर जे दे गला सेटा होची तमर कोन ना सेटा होची गोटे सोर्स आउ गोटे सोर्स दे कोन जीवो ना इनटू द सिनर्जिड देकी जीवो हला दीटा सोर्स ता तो एंट्री इन द सिनर्जिड भीतर देकी जीवो आउ गोटे होची सिनर्जिड रो वाल आउ गोटे सिनर्जिड आउ सिनर्जिड रो वाल बा एम्ब्रियो सैक वाल देकी जीवो दिस इज एम्ब्रियो सैक वाल ऑफ एम्ब्रियो सैक ओके एंड दिस इज द सिनर्जिड देखा पिले एठी जेतेबेले कोन होची ना सिनर्जिड भीतर देकी जाउची सेटा गोटे सोर्स हबो आउ गोटे होची सिनर्जिड आउ एम्ब्रियो सैक रो वाल गोटे होची एम्ब्रियो सैक रो वाल एटा होची एम्ब्रियो सैक हैला तेणु से एम्ब्रियो सैक रो वाल देखी जाउची हैला आउ सिनर्जिड मजर होची ता भीतर देखी जाउची आउ गोटे कोन डायरेक्ट सिनर्जिड देखी जीवो मन कर एटा अछि डायरेक्ट सिनर्जिड देखी जीवो केमती ना देखो एमती अछि तो सिनर्जिड मन कर एटा गोटे सिनर्जिड अछि एटा गोटे सिनर्जिड अछि तो ए भीतर देखी जीवो का भीतर ना दिस हैला तार तो एमती जीव आ गोटे को पटे ना डायरेक्ट एमती जीव तार तो एम्ब्रियो सैक रो वाल सिनर्जिड देकी जीव आ डायरेक्ट थ्रू सिनर्जिड्स हैला सेटा होची तमरा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक खाली हमको स्ट्रक्चर करके देखिबार अछि कोन देखिबार अछि ना गोटे डायरेक्ट थ्रू सिनर्जिड्स आ गोटे होची सिनर्जिड रो वाल आ गोटे होची एम्ब्रियो सैक रो वाल रो मिडिल स्पेस देकी जीव हैला तापर नेक्स्ट जीवा फर्टिलाइजेशन तापर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पिले फर्टिलाइजेशन जोटा कि हमें पिले देखिले नवासिन देले डबल फर्टिलाइजेशन तो जो डबल फर्टिलाइजेशन बर्तमान देखिबा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन occurs हैला बिफोर एंटर इनटू द pollen tube into the embryo sac this is called what now this is called the embryo sac after entry of pollen tube into the embryo sac one of the two male gametes okay तांका भितर दीटा मेल गैमेट अछि गुटे कि अछि ना हमर जर्मिनेसरी वेजिटेटिव सेल जोटा के हम कहउछ ट्यूब सेल से ट्यूब सेलटा संगे संगे एंट्री कला पर सेटा डिसेंटेट हो जिवो तार किछ रोल नाही तार काम होची कोन से केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिबो काकू ना दीटा मेल गैमेट जे पर्यंत फर्टिलाइजेशन न होईची से पर्यंत ताकू नरिशमेंट करिबो after enter into the embryo sac the two male gamete then one of the what the tube cell the one tube cell can degenerate tube cell ता भीतर degenerate कर जीवो केवल दीटा मेल गैमेट मन कर ए देखो एटा ट्यूब सेल देकी आसिला बा सिनर्जिड देकी आसिला सिनर्जिड से देश देकी जत आसुची से दीटा मेल गैमेट एठी कोन करछ गोटे मेल गैमेट एठी जाउची आ गोटे मेल गैमेट ता एठी की जाउची द फर्स्ट मेल gamete is haploid this is haploid and this is diploid that is the central cell or polar nucleus दा को कहउछ central cell or polar nucleus और सेकेंडरी न्यूक्लियस ताको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहउछि पोलार न्यूक्लियस भी कहउछि एवं सेंट्रल सेल भी कहउछि काहे ता रीजन थिबर तार नाम सब दिया है काहे कि ना सेंट्रली पोजीशन हेतिबारु ताको सेंट्रल सेल कहउछि पोलार रीजन रु गोटे देखो एठु चारटा थिला एठी चारटा थिला टोटल 8टा न्यूक्लियस थिला से 8टा न्यूक्लियस रु 3टा एपट रहला 3टा एपट रहला आउ एथरु कहला ना एथरु जो 3टा रही गला कोन ना दीटा एटा हला तबर कोन दीटा सिनर्जिड देला ये भी सिनर्जिड this is also synergid and this is the egg these are the three antipodal cell hela
दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस सॉरी दिस इज द सेंट्रल सेल और पोलार न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस तेणु जो 8टा न्यूक्लियसटा थिला ता भितर गोटे सेल भितर एम्ब्रियो साक भितर जो से माने कौन कर आरेंजमेंट होउचंदी हैला तो सेते बेले कौन होउची पिले ना 3टा न्यूक्लियसटा चालाजाल एंड रहउची दिस इज द चालाजाल एंड and this is the micropyle end तेणु माइक्रोपाइल एंड रे किए पोलेन ट्यूब एंट्री कला 2टा मेल गैमेट छाड़िला एवं ता सहित जो ट्यूब सेल थिला से ट्यूब सेलटा से जगह डिसेंडेट करियला कहीं ना तार किछि रोल नहीं तार रोल केते समय पर्यंत थाए ना जे पर्यंत आमर ट्यूब जोटा कि पोलेन ट्यूबटा एम्ब्रियो साक भितर को न एंट्री करिछि जेतेबेले एंट्री करिगला सेतेबेले तार फंक्शन बंद हो जाए तो सही जगह से डिसेंडेट कर जाए है तेणु ता भीतर कौन रहा 2टा मेल गैमेट रहा दीज टू मेल गैमेट्स एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक देन वन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेस विथ द एग ऑफ द एग apparatus तातो ए जो एग apparatus 2टा को मिसेकी कहउछन्ती एग apparatus से एग apparatus रे थिबा एग सहित फर्टिलाइज कला जोटा को हमें कहले सिनगामी ओके सिनगामी मीन्स द first male gamete fertilizes with the egg of the egg apparatus and this is called syngamy or it is otherwise called as the true fertilization okay that is called syngamy or true fertilization हैला से कौन होची ना syngamy true fertilization रो हम दउची zygotes हैला and that is a two way बुझला पिले देन अनदर मेल गैमेट कहीं गोटे फर्टिलाइज कला अनदर मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विथ द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियस दैट इज ट्रिप्लॉइड फॉर्म दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ the polar nucleus or the secondary nucleus or the central nucleus which is diploid and this is diploid and this is haploid that means is equal to triploid so it is called triple fusion सेति पय ताको हमें कहले ट्रिपल फ्यूजन कहिबार कारण होची जे एटी डिप्लॉइड थिला एटी हैप्लॉइड ऐड हला हैप्लॉइड किए ना सेकंड मेल गैमेट when the second male gamete fertilizes with the fusion product of a polar nucleus then it is converted into triploid and that fusion is called a triple fusion and this triple fusion gives rise to the primary endosperm nucleus that is shortly we call the PEN this primary endosperm nucleus then again converted into endosperm okay this primary endosperm nucleus converted into endosperm and this endosperm can nourishes the zygote to develop the what na embryo बुझला पिले ताहाले एंडोस्पर्म टा जाइगोट को कौन कला नरिशमेंट कला एवं जाइगोट टा एम्ब्रियो फॉर्मेशन कला ताहाले एटी हमें कौन जानिले जे सिनगामी रहउची ट्रू फर्टिलाइजेशन सेतरे जाइगोट डेवलप होला आउट ट्रिपल फ्यूजन रे हमर प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हला एवं से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जे कि डेवलपमेंट हला परे दोची एंडोस्पर्म एवं एंडोस्पर्म ढाउचुटे न्यूट्रिटिव टिश्यूज एंड दैट न्यूट्रिटिव टिश्यूज और एंडोस्पर्म हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो तो जाइगोट को नरिशमेंट कला कहा को एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है this is called the double fertilization and triple fusion and which was proposed by Nowotny okay next last part रोच पिले कौन रोची ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स माने फर्टिलाइजेशन हो गला कौन फर्टिलाइजेशन है ना गोटे है सिनगामी आउ गोटे ट्रिपल फ्यूजन सिनगामी रे आमे कौन पाइले ना जाइगोट पाइले आओ ट्रिपल फ्यूजन रे कौन पाइले ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाइले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टा एंडोस्पर्म को डेवलप होला एवं एंडोस्पर्म डेवलप हला परे जाई कि हमर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची काहे कि ना यही एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट करूची एवं ए जाइगोट टा नरिशमेंट हेले दउची कोन ना एम्ब्रियो जोटा कि हम ओडिया रे कहउछन्ती भ्रूण तेणु गोटे भ्रूण होगापी हेले कहार भूमिका रोची ना ट्रिपल फ्यूजन भी
सहयोग रोचे तो ट्रिपल फ्यूजन हेले आम से लास्ट को एंडोस्पर्म पाँच जोटा कि तार गोटे न्यूट्रिटिव टिश्यू गोटे नरिशमेंट प्रोवाइड कर तेणु से नरिशमेंट कर जाइगोट को एवं जाइगोटा एम्ब्रियो को डेभलप हो तेणु दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय नोआ स्किन देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स माने फर्टिलाइजेशन हो गला तापर कौन हम तो फर्टिलाइजेशन है कौन हम पिले टोटाल एंटायर ओभारी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स तार तो एंटायर ओभारीटा फ्रूट्स को कन्वर्ट हो एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड ovule converted into seed and then the collagen and these are the integuments gradually integuments converted into the seed wall तो seed रो wall को convert होइदिबो किए ना this is bitegmic ovule ताको हम कहउछन पिले bitegmic ovule this bitegmic ovule after fertilization converted into the seed wall okay then the 3 antipodal cells degenerate then 2 synergid cells also degenerate okay then pollen tube also degenerate the entire ovary converted into fruit and the ovule converted into seed and the integument converted into seed wall. This is all about your double fertilization and triple fusion. Okay, thank you to all for watching this video. Thanks to all.